give me 1 more minute so that the book can be downloaded in another live session. Okay, it's there. Okay, we are good to go, guys. Yes, sir. Welcome, guys. Assalamu alaikum. This is Dr. Tariq Jam. So I was already teaching in section B, C and D. Students of section E would be new for me, and the way I make up the concepts of stress analysis in section C and D would be different than the concepts that were developed in section E. So section E, guys, if you need space, extra classes from my side, do let me know. I can take a few extra sessions to cover up your concept that have been missed in the past class. So हमने किया ये था कि चैप्टर नंबर 1 में डेरिवेशंस करी थी, और डेरिवेशंस कराने का पर्पस ये था कि आप लोगों को हार्ड कोर डीप कॉन्सेप्ट्स दिए जा सकें, ठीक है। डेरिवेशंस एग्जाम मिड टर्म में भी नहीं आई थी, और वो डेरिवेशंस फाइनल एग्जाम्स में भी नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से स्ट्रेस एट अ पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दूसरे सेक्शन में भी जो है वो ले आता हूँ टॉपिक। एक मिनट, मैं इसको पीडीएफ में खोल लूँ। गिव मी अ सेकंड टू डाउनलोड, एंड हियर इट इज। Why it is not opening on the PDF. Acha, so these are the Cartesian component of stresses. Okay. These Cartesian component of stresses define the complete state of stress at one point. Okay. After knowing these Cartesian component of stresses, we can able to determine the principal stresses, and using principal stresses, we can determine the maximum stress acting at that particular point. Okay. After knowing the maximum principal stress, that is sigma 1, and minimum principal stress, that is sigma 3, and tau max, we will compare these stresses with the strength of the material. Okay. To calculate the von Mises stresses that we will learn down the classes, we need to know the value of sigma 2 as well. Okay. तो हमें एक पॉइंट से पास होने वाली सारी प्लेन्स के स्ट्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मटेरियल सिग्मा 1 सिग्मा 3 को सर्वाइव कर रहा है, टॉ मैक्स को सर्वाइव कर रहा है, तो उस पॉइंट से पास होने वाली बाकी प्लेन के जो स्ट्रेसेस हैं उनको भी सर्वाइव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है। वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेन or the deformation of that particular point and of the entire object, because in many cases when the parts are in relative motion, so the deformation should be fall within the allowable limits. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका इसलिए बता रहा हूँ कि हम चैप्टर नंबर 2 आज जो डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने स्ट्रेस एट अ पॉइंट जो है वो डिस्कस किया था, हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन डिस्कस की थी, ठीक है। देन वी जंप टू द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, we learned and we discussed the principal stresses, how we can obtain the
simple stresses using the Cartesian component of stresses acting at one particular point. Okay. Then we learned about how we can transform one set of Cartesian components in another set of Cartesian components of stresses. Okay. So this is what we learned in chapter number 1. Okay. Chapter number 2, if you have the good understanding of chapter number 1, you can easily grasp the concepts of chapter number 2, that is strain. Okay. What is strain? Can someone able to define me strain? We have already learned and discussed in earlier classes. Haji Sir, should Adnan? I tell? Sir, should I Yep. tell? Sure. सर जो चेंज आए मतलब प्रेशर डालने से जो डिफॉर्मेशन चेंज आए Mm-hmm. वो स्ट्रेन है. Sir, ratio of change in length upon original length. Mm-hmm. Mm-hmm. Deformation जो है, द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेन. ठीक है. स्ट्रेन जो है, इट इज द रिलेटिव चेन बिटवीन द 2 पॉइंट. ठीक है. अगर नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, अगर हम शेयर स्ट्रेन, इफ यू डिस्कस शेयर स्ट्रेन, सो वी नीड टू हैव वी नीड टू नो द रिलेटिव मोशन बिटवीन 3 पॉइंट्स. ठीक है. तो रिलेटिव मोशंस को समझने से पहले आपको एब्सोल्यूट जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो पता होनी चाहिए इंडिविजुअल पॉइंट्स की. ठीक है. तो आफ्टर द डिफॉर्मेशन, इफ पॉइंट ए इज मूव बाय यू, वी एंड डब्ल्यू, and then point 2 move by u1, v1 and w1, or you can say u2, v2 and w2, and point 1 is moved by u1, v1 and w1. Then after that you can able to obtain the values of normal stress, normal strain. ठीक है. हमें जब तक दो इंडिविजुअल पॉइंट्स की एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट्स नहीं पता होंगी तो हम डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट होता है वो इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है कि यू, वी एंड डब्ल्यू, दीज आर द एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ वन पॉइंट. ठीक है. और फिर हम दो पॉइंट्स की के दरमियान की जो डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं तो उससे हम फिर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स की मदद से वी कैन एबल टू ऑब्टेन द नॉर्मल xx, epsilon yy and epsilon zz. These are the normal strain that we obtain from the relative motion of point P and point Q. Okay, that was initially delta x distance apart, and after the deformation, the distance changed to delta x dash. Okay, before the deformation, the distance was delta x, and after the deformation, after the application of load, the distance between these point P and point Q are is delta x dash and delta x dash here. Okay, so these equations would be reduced to simplified this form, and how that was happened. So can you see this formula here? Can you see this expression on your screen, Adnan? Yes sir, we can see, but थोड़ा सा zoom कर दें. Let me zoom in. Yes sir, clear है. Okay. In live session 2, can you see this thing? Who is the moderator? Rabit? Rabit, can you see the expression of the normal strain on your screen? That's great. That's great. Rabit has confirmed. So how this? So this is the expression for the normal strain in x direction, y direction, and z direction. X, y, and z. Okay, and later it would be reduced to expression of dawa v by dawa x. And how it happens, because we will ignore the
higher order displacements, higher order change. Okay, so so typically the values of the strain is of the order of 0.002, 0.004. So that's why if we take the square of the relative motion, okay, the change of displacement with respect to x, with respect to y, and with respect to z would be negligible if we take the square of 0.002. So it would be a negligible number. Okay, so we can ignore these terms. Okay, ignore these term, and this term again turn out to be whole square. The square would be cancelled out with the under root, and this one later would be cancelled by this one. Okay, I'm explaining this in session 2 also. So this term would be ignored, this term would be ignored, and this whole thing will turn out to be a square, and the under root would be cancelled out with the square, and later this one would be cancelled out with this one. Okay, so finally we will end up with a expression. Give me a second. Finally, the normal strain would turn out to be this thing. Here you can see epsilon xs is equals to the change of displacement in x direction with respect to x. As simple as that. Okay, and here you can see whereas the shear deformation or shear strain would be simplified to this value. Got it? So these are the 6 Cartesian components of strain. Where are the rest of the 3? There should be 9 Cartesian component of strain. सर सेम होंगे ना वो तो? हाँ जी बिल्कुल सेम होंगे. ठीक है, तो जस्ट लाइक इन चैप्टर नंबर 1, after knowing the 6 Cartesian component of stresses, you can able to determine the stress of acting on any plane passing through a point. Same like that, if we know the Cartesian component of strain at one particular point, we can able to determine the strain in any direction. ठीक है? Are you following me? Yes, sir. That's great. So this is the value of strain and 6 Cartesian components of strain. Now, this is the derivation for the strain transformation. Okay, so I am not going into the details how this derivation has been done. So let's jump to the conclusion directly. Okay, let's jump to the conclusion of the transformation expressions for the transformation, how we can transform the one set of Cartesian component of strain into another set of Cartesian component of strain. This is another second set of Cartesian component of strain. Epsilon x dash is the second set of Cartesian component of strain. Just give me a second. Is this expression look familiar to you? Is it? Does it seem to be familiar to you? Yes, स्ट्रेस में भी यही क्वेश्चन यूज किया था हमने. ये कुछ देखा वाला लग रहा है आपको एक्सप्रेशन? Yes, sir.
चैप्टर नंबर 1 में यस सर, स्ट्रेस में भी, हाँ जी, स्ट्रेस चैप्टर में भी नंबर था। 1 में जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने की थी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन और यहाँ पे जो नजर आने वाला एक्सप्रेशन एक काफी सिमिलर है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर आपके हाथ यस में सर, एप्सिलॉन, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन है बस। हाँ जी, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन आ गया, बिल्कुल। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। एक जो चेंज है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा। जरा आप यस सर, जो बुक है, अगर आपके पास बुक है तो जरा कंपेयर करें यहाँ पे क्या चेंज है। राबित, कैन यू टाइप द चेंज? एनीवन एल्स? अजीम, उबैदुल्लाह, की जगह फारूक? सर आई थिंक एंगल जो है वो एक्स और वाई में होना चाहिए था। हाँ जी, जो डिफरेंस है, mention the difference in this expression compared to the expression that we learned in chapter number 1. सर, इसमें 2 भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, यहाँ पे टू का फैक्टर नहीं है इधर, ठीक है। और ये वाला फैक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रहा होगा? शेयर स्ट्रेन की सूरत में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूजिंग दैट एनालॉजी वी कैन ड्राइव द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन, ओके, फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेन आल्सो, ठीक है। तो जहाँ पे एप्सिलॉन सिग्मा है उसको तो हम डायरेक्टली एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टॉ था, टॉ एक्स वाई था, उसको हम रिप्लेस करेंगे हाफ से, ठीक है। तो वो फिर 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म है वो एग्जैक्टली स्ट्रेन के लिए जो है ना वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो अब जरा दूसरे वाले एक्सप्रेशंस को भी देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल स्ट्रेन के एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। दीज आर क्वाइट सिंपलर। लेट्स check out the expression for the shear strain transformation, for the shear strain, ठीक है। ये expressions देखें। What is the difference here? Can you compare this equation with your previous equation of stress transformation of chapter number 1? सर इसमें एप्सिलॉन का साथ 2 आ रहा है, जबकि हमारे पास जो पिछले वाला था उसमें स्ट्रेस का साथ 2 नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये 2 यहाँ से नहीं आया है, ये 2 लेफ्ट साइड से आया है, लेफ्ट साइड से। सॉरी सर, सेकंड मीटिंग से मैसेज आया है लोगों का कि आवाज क्लियर नहीं है सर उसमें। तो काइंडली उसमें आप चेक कर लें जरा, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज सही नहीं आ रही है उसमें। तो ये जो यहाँ पे जो 2 मिसिंग है, यहाँ पे जो 2 नजर आ रहा है आपको, ये एक्चुअली इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम हियर, इट इज कमिंग आउट टू बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके। यहाँ पे जब आप टॉ एक्स डैश वाई डैश था तो उसको आप रिप्लेस करेंगे गामा एक्स डैश वाई डैश डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है। एंड दैट 2 विल गो टू द राइट साइड, ठीक है। तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो फाइनली इवेंचुअली योर एक्सप्रेशन वुड टर्न आउट टू बी लाइक दैट। Getting the point? Okay, so using the same analogy, using this analogy, we can develop the equation or expression for the principal strain also. So we have to replace epsilon sigma xh with epsilon xx, okay, sigma yy with epsilon yy, sigma zz with epsilon zz, okay. And wherever we find the tau xy, we will replace it with gamma xy divided by 2, okay. Tau xy would be replaced with gamma xy
by 2, okay, in all the equations. Now, using this analogy, we can develop the equation for the principal strain. You can develop the equation for the principal strain. Okay, so now your quick uh, homework is open the expression for the principal stresses of chapter number 1 and develop this equation by yourself right now in next 2 minutes. I am to write down the expression for the principal strain by yourself. Okay, ignore this, and using the expression for the principal stress, develop this expression. Still, the class strength is not that good. 65 students are here and 34 students are in another session. So it would turn out to be less than 100. Where the rest of the students are? I think there are more than 110 students. Folks, can you now type your complete seat number in the chat area? Only the seat number without name. Type your seat number in the chat area, only the seat number. I will compare your seat number with your name and then will mark your attendance. That's great. Rizwan, just type your seat number. It will help me in obtaining the data quickly. Sayyid Taha Rizwan. Thank you. Thank you, Rizwan. Sir, I just get a message from my friend who is in another session that the session expired, the other section. Can you type your comments in the chat area? Right now, I'm dealing with 2 sessions, so it will help me to answers easily if you type in the chat area. Folks, if you have any question, please type it in the chat area. The other session has expired. It is with me. I can. It is logged. Hamza, who told you that the other session has expired? Okay, so did you get chance to look into the expression of the principal stresses in the chapter number 1? Did you guys able to write the expression for the principal strain using the analogy? Yes, sir. That's great.
Bilal Ashraf. Bilal, can you type in the chat area? Are you there? Please write in the chat area. I know you guys are facing a hard time because I'm running 2 parallel sessions. Okay, Bilal is there. That's great. Okay, now let's back to the class. Let's back to the class. Taha Shaukat, can you arrange an extra live session with you guys because you guys did not complete chapter number 1 with me? Taha, if you can hear me, please arrange an extra live session to have the better understanding of concepts of chapter number 1. यस सर, वो आप मुझे टाइम वगैरह बता दीजिएगा, मैं अरेंज करवा दूंगा। सैटरडे को भी हमारी एक क्लास है, तो अगर आप कहें तो उसके बाद ही करवा दूंगा। हाँ, मुझे बेसिकली आप लोगों के लिए काफ़ी सीरियस जो है ना वो कंसर्न है कि जो ना आप लोग जो है वो ग्रैप नहीं कर सकते चीज़ें फ्यूचर की, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने नहीं पढ़ा है सही तरह पूरा। तो मिड टर्म से पहले भी मैंने पूरा नहीं कवर करा सका था, क्योंकि वो मुझे सेक्शन आप लोगों का मिडल ऑफ दी में जो ना वो कवर किया गया। अच्छा जी, so far so good. Okay. यस सर, मैं आपको फिर बात करके बता दूंगा उसका एक्स्ट्रा का। अच्छा, ये ऑफर जो है ना वो सेक्शन सी और डी के लिए भी ओपन है। अगर आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लाइव सेशंस करने हैं मेरे साथ, तो वी कैन प्लान दैट लाइव सेशंस ऑन संडेज, ओके, और मे बी एनी अदर suitable time. So let's discuss the compatibility equations. We have still 10 minutes in our hand. Compatibility equations, अगर मैं इसको simple words में express करूँ, so these are the strain equilibrium equation. ये on record में लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये गलत statement है actually. Compatibility equation define that the strain field that we are obtaining from any calculations are realistic or not. Okay, if a material is deforming, basically जो है वो material जो है वो सारी directions में deform हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक point से नहीं हो रहा, उसका adjacent point भी deform हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ हैं और एक पॉइंट जो है वो ज़्यादा डिफॉर्म हो जाए और दूसरा जो एडजेसेंट पॉइंट है मटीरियल डिफॉर्म हो, ठीक है। अगर वो स्ट्रेन में कोई इम्बैलेंस होगा तो दैट स्ट्रेन फील्ड इट्स नॉट रियलिस्टिक और कैन नॉट बी हैपेंड, ठीक है। तो अगर तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। 2 कंडीशंस क्या होंगी कि अगर कोई अनरियलिस्टिक स्ट्रेन जो आप जो है वो आपने कैलकुलेट की है, तो अगर वो स्ट्रेन बैलेंस नहीं हो रहा है थ्रू आउट दी मटीरियल, तो या तो मटीरियल टियर करेगा या फिर ओवरलैप करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लें कि ओवरलैप तो किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो या नहीं हो, ठीक है। ओवरलैप तो मटेरियल हो ही नहीं सकता जहां एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल जो है वो उसकी रिप्लेस उसकी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ, एक चीज पॉसिबल है, टेयरिंग, ठीक है, टेयर हो सकता है मटेरियल, फेल हो सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त जो स्ट्रेस एनालिसिस जितनी भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम स्टेट की कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी इलास्टिक रीजन में, ठीक है, प्लास्टिक रीजन की बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो प्लास्टिक रीजन में भी खैर टेयर नहीं करता है, लेकिन बहरहाल हम फेलियर की से आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इन इन इक्विलिब्रियम state or in equilibrium condition the material should also not tear, ठीक है। तो compatibility equations जो है ना हमें हेल्प करती हैं, हम जो है ना स्ट्रेन को चेक कर सकते हैं कि हमने जो स्ट्रेन फील्ड डिटरमाइन किया है सही है। जैसे यहाँ पे गामा एक्स वाई का फंक्शन है और हमने एप्सिलॉन एक्स एक्स का भी फंक्शन कैलकुलेट किया और एप्सिलॉन वाई वाई का भी फंक्शन कैलकुलेट किया, ठीक है। तो वी विल मेक दिस टेस्ट and we will make a comment that the provided or the calculated strain field is compatible or is realistic और जो है वो उससे कोई मटेरियल टीयरिंग या ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम. Here you can see the problem in 2.15. 2.15 प्रॉब्लम जरा आप चेक करेंगे अपने एंड पे. हाँ जी, देखिए ये एप्सिलॉन एक्स एक्स की स्ट्रेन फील्ड है. स्ट्रेन फील्ड क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्लेनिंग द नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इन द एंटायर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट का स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। ये जर्नल स्ट्रेन फील्ड डिफाइन की हुई है समहाउ. अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कैसे डिफाइन होगी, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है कि स्ट्रेन फील्ड कैसे डिफाइन होगी, ठीक है। बहरहाल ये स्ट्रेन फील्ड डिफाइन हुई है, ठीक है। इसी तरह से एप्सिलॉन वाई वाई की स्ट्रेन फील्ड डिफाइन हुई है, ठीक है। एंटायर ऑब्जेक्ट में अगर किसी पॉइंट पे मुझे एप्सिलॉन वाई वाई कैलकुलेट करना है तो आई विल यूज द कोऑर्डिनेट्स एंड विल कैलकुलेट द एप्सिलॉन वाई वाई एट दैट रेस्पेक्टिव पॉइंट, ठीक है। Now we have obtained somehow we have obtained the strain field for the entire object, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन नजर आ रहे हैं और उसके आगे एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड आई मस्ट नीड टू इंश्योर that this strain field is realistic, it's compatible, and the strain are balancing with the neighboring deformation. The deformation at one point is in respect in according to or it's not out of balance with the adjacent point, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस में जरा प्लेस करके चेक करें कि क्या ये स्ट्रेन फील्ड कॉम्पेटिबल है या नहीं है। वहाँ पे 6 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। उनमें से कोई एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वी विल नॉट वर्क ऑन दिस एक्सप्रेशन एनी मोर और वी विल डिस्कार्ड दीज एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया चैप्टर नंबर 2 में से स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का? कैन यू राइट इन द चैट एरिया, डिड एनीवन कैलकुलेट or determine the compatibility of strain field, given strain field? Bilal Ahmed, Azim, Sultan, नीरज कुमार साहब, आपने कोई क्वेश्चंस किए चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व किए? दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो आपने करना यह है कि इन एक्सप्रेशंस को आपने जो है वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस में प्लेस करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी क्लास डाउन द लाइन?
After this session, we कोई क्लास है इसके फौरन बाद आप नो लोगों की? सर, नो सर, नो सर। So I can take a bit longer. Okay. तो compatibility equations हमने डिस्कस, अब जरा जो है ना वो आगे मूव करते हैं. We are done with the okay. So volume dilatation. What is volume dilatation? Volume dilatation is the volumetric strain. Normal strain कैसे निकालते हैं आप लोग? Change upon original length, or in other words, final length minus initial length divided by the initial length. So how you can calculate the volumetric strain? You can calculate the volumetric strain by taking the difference of the final volume minus initial volume and divided by the initial volume. Okay, so यहाँ पे एक छोटी सी derivation है और it is not that complicated. ठीक है, इसका conclusion ये है कि we can determine the volumetric strain using the first strain invariant. ठीक है, stress invariants को किस लेटर से एक्सप्रेस करते थे? Can anyone write in the chat area? स्ट्रेस इनवेरिएंट को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते थे? That's great. Bilal Ahmed, Azim Arshad in live session 2. Kamar, are you there? यस सर। हाँ जी अजीम, हम किस लेटर से जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस इनवेरिएंस को रिप्रेजेंट करते थे? आई से. और व्हाट आर दी स्ट्रेस इनवेरिएंट्स? स्ट्रेस इनवेरिएंट्स will not change, or they are independent of the coordinate system. ठीक है, I1, I2, I3 आप कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 से कैलकुलेट करें या उसी पॉइंट पे के किसी और कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेट से कैलकुलेट करें, the values of the sigma I1, I2 and I3 will not change. And same goes with the strain invariants. And strain invariants are represented as J1, J2 and J3. Okay, so these will not change and these are the independent of the coordinate system. So here you can see volume dilatation is equals to epsilon 1 epsilon 1 plus epsilon 2 and plus epsilon 3. Okay, epsilon 1 plus epsilon 2 and epsilon 3. So this is the summation of the principal strain, and principal strain or principal stress can be used as one of the coordinate system, as one of the Cartesian component of stress or Cartesian component of strain. Principal stress हो या principal strain हो, that can be used as the one of the set of Cartesian components. ठीक है, अब जब हम epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 को ऐड करते हैं तो that would be equal to the strain invariant. So we can calculate the volume dilatation using epsilon xx, epsilon yy and epsilon zz, or epsilon x dash, epsilon x dash, epsilon y dash, or epsilon z dash, z dash. Okay, because in all of these cases, these would be equals to the first strain invariant. Okay, stress strain relationships. So this is the generalized Hooke's law. This is the generalized Hooke's law, where each value of stress is dependent on the all 6 Cartesian components of strain. Okay, this is the generalized Hooke's law, or K1, K11, K12, K13 are the materials
elastic constants. ठीक है जनाब, ये this is generalized Hooke's law. If you see the definition of stress, force per unit area, so by definition the stress has nothing to do with the strain. Same goes with the strain. Length upon original length is the strain. Strain is a geometric quantity that is easy to measure. That's why it is taken in the along the x-axis in the stress strain diagram. So by definition, strain has nothing to do with the stress. Okay. So Hooke's law, yeah, generalized Hooke's law. Hooke's actually noticed the relationship between the stress and strain. And if we consider the one-dimensional Hooke's law that states that the stress is directly proportional to the strain, and when we remove the sign of proportionality, we have to introduce a constant, and there we introduce E, Young modulus, or the elastic modulus. ठीक है. तो in the case of generalized Hooke's law, यहाँ पे हम इसको E नहीं कहेंगे क्योंकि जो डायरेक्ट कंपोनेंट है वो तो E से रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो दूसरे डायरेक्शन का स्ट्रेन है दैट हैज टू बी रिलेटेड विद द पोसॉन और सम अदर इलास्टिक कांस्टेंट. ठीक है, तो ये सारे के सारे ये इलास्टिक कांस्टेंट है K112 K66. ओके, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल वी नीड टू डिफाइन द 21 इलास्टिक कांस्टेंट. यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे 36. ठीक है, ये 36 रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम. स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम की वजह से ये 36 इलास्टिक कांस्टेंट रिड्यूस हो जाते हैं 21 में. सही है ना. तो अगर एक मटेरियल प्योर एन आइसोट्रोपिक है, यानी कि हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो तब भी हमें 36 इलास्टिक कांस्टेंट नहीं डिफाइन करने, हमें सिर्फ 21 इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन करने होते हैं. ठीक है, तो और आइसोट्रोपिक मटेरियल में कितने इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन करने होते हैं? अगर प्योर आइसोट्रोपिक मटेरियल है, यानी कि सारी डायरेक्शंस में मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, तो इन दैट केस वी हैव टू डिफाइन 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स. ठीक है, अब वो 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो 5 टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं. इनमें से अगर कोई भी 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स आप डिफाइन कर देते हैं, कोई भी 2 इन आउट ऑफ दीज 5 इलास्टिक कांस्टेंट, if you determine if you can define the material using any 2, rest of the elastic constants can be calculated using that. Okay, so lambda and mu are also the elastic constants that are used to define the material mechanical properties. Okay, तो हम इस चैप्टर में म्यू और लैम्डा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दी फिजिकल सिग्निफिकेंस. और म्यू की तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, लैम्डा की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं होती. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, इन दिस कोर्स आउटलाइन वी विल रिमेन we will continue to use E and mu that you have already learned in your previous courses. ठीक है, तो this is the expression for the stress strain relationship for isotropic material. These are the expression for the stress strain relationship for isotropic material, a pure isotropic material whose properties are same in all directions. Okay, so to give the complete material description, we have to define 2 elastic constant, E and mu. Okay, what is mu? It is the Poisson ratio, lateral deformation divided by longitudinal deformation, minus of lateral deformation divided by longitudinal deformation. Okay, so here in these expression, these are strain as a function of stress, and in the bottom side, lower side, you can see the stress is defined as a function of strain. ठीक है, तो जहाँ पे आपको स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन निकालना है, यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस. और जहाँ पे आपको स्ट्रेन गिवन है और स्ट्रेस निकालना है, यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस.
आप दोनों सूरतों में दोनों एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपस में साइमल्टेनियसली रिजॉल्व करके, ये वाले एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली रिजॉल्व करके ये वाले एक्सप्रेशन नीचे डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो हैं दोनों सेम। तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपका जो है ना वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी होगी इस लाइव सेशंस में, क्योंकि पैरेलल चल रहे हैं। आई कैन नॉट फोकस और गिव यू गुड अटेंशन और टेक योर क्वेश्चंस इजीली। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन इग्नोर, यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट्स बताएंगे हैं, ठीक है। यूजिंग द स्ट्रेन displacement relationship, this is the displacement field, this is the displacement field. Using the strain displacement relationship you can calculate the strain, 6 Cartesian component of strain if the displacement field is defined. तो यहाँ पे तो आपको strain field displacement field given है, आप strain निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको जो है ना वो strain transformation equation अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे आपने नंबर 1 में स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अप्लाई की थी, यहाँ पे आपको स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अप्लाई करनी है टू डिटरमाइन एनी अदर सेट ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन। फिर उसके बाद कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस के क्वेश्चन है नहीं, इससे पहले आपके प्रिंसिपल स्ट्रेन के क्वेश्चन होंगे। ये 2-10 से लेकर 15 तक कार्टेशियन कंपोनेंट्स सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेन के क्वेश्चन हैं दैट यू हैव टू सॉल्व। फिर कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको कॉम्पेटिटिव इक्वेशन के एक्सप्रेशन से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और कमेंट करना है कि प्रोवाइडेड स्ट्रेन फील्ड इज कॉम्पेटिबल इज रियलिस्टिक और नॉट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो है ना वो किसी पॉइंट पे मटेरियल ओवरलैप कर रहा है या टियर कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो क्वेश्चन है 2-24 से लेकर 2-37 तक, 2-24 से लेकर 2-37 तक आई विल गिव यू दी एक्सप्लेनेशन, ओके। मैं एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन इसके लिए बना के आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो आई विल गिव यू हिंट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लाइव सेशन। लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द गूगल क्लासरूम और सेंड मी डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। यूजुअली मैं 1 या 2 दिन लेता हूँ रिप्लाई करने में, और अगर नहीं रिप्लाई दूँ तो काइंडली सेंड मी रिमाइंडर। थैंक यू फॉर रिमेनिंग इन द लाइव सेशन विद मी। ज़रा अटेंडेंस की सूरत हाल देख लेते हैं। इस वक्त 63 जो है ना वो लॉगिन है और इस वक्त 30 लॉगिन है, ठीक है गाइस। यू कैन चेक आउट फ्रॉम द क्लास। थैंक यू। You may check out from the class. Check out from the class session in session 1 and session 2.